Good morning. Next topic is electron gain enthalpy or electron affinity. So, electron gain enthalpy is a form of energy, and electron affinity is a tendency that we will discuss how these two are related with each other. That the amount of energy released when an extra electron is added to neutral isolated gaseous atom to form an ion. So when we add electron to atom, extra electron to an atom, obviously there is a force of attraction. Like if we have this, atom, okay, and we are going to add one extra electron to it. Obviously there will be a force of attraction between the nucleus and the electron. Due to this force of attraction is there, then energy is released. That energy released is called electron gain enthalpy. It means this process, the adding of electron process, is exothermic process. तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हमने पढ़ा था, उसमें था कि when an electron is removed from an atom, then energy is required. ये उसका उल्ट हो गया. When electron is added to an atom, energy is released. Why energy is released? Because when electron is added, there is a force of attraction between the nucleus and the electron. So that's why when there is a force of attraction, then energy will release because it's going towards stability. Now, what is electron affinity then? Electron affinity is a tendency of an atom, tendency of an isolated atom to take an extra electron. That's tendency, its capacity. How we can find its how we will compare its capacity? That is based upon electron gain enthalpy. Now suppose we have three atoms A, B, C. When we add an extra electron to A, it's in gaseous state. It changes into an ion. When we add an extra electron to B, it changes into an ion. When we add an extra electron to C, it changes into an ion. Suppose the energy released during these processes is, say, minus 700 kilojoule per mole, minus 300. Okay, and say plus 110. How we can compare out of A, B and C, which has a more electron affinity, which has a more tendency to take electron, that is A. Because जितनी यहाँ पे force of attraction ज़्यादा होगी between the nucleus and the electron, जितनी force of attraction strong होगी, उतनी ही energy release ज़्यादा होगी. So from the value of energy release, we can compare their electron affinity, their tendencies. Like when A sep electron, 700 kilojoule energy is released. Minus means released. Exothermic. This magnitude is 700 kilojoule. When electron is added to B, it's 300 kilojoule energy is released. It means out of A and B, A has a more tendency to take up electron. A has a more attraction for extra electron. It means the electron affinity of A will be more than B. Then let's see. What about C? When it takes electron, energy is required. एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उल्टा एनर्जी देनी पड़ेगी. इसका मतलब क्या है कि C क्या है? C पहले से ही स्टेबल है. C has no tendency to take extra electron. हम उसको इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती दे रहे हैं. That's why energy is required. In case of noble gases, अगर नोबल गैस है ना, सपोज करो एक आपके पास कोई हैलोजन है, फ्लोरीन को आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो झट से ले लेगा, क्योंकि उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p5. इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, फटाफट ले लेगा. दूसरी बात, फ्लोरीन का साइज जो है वो सेकंड पीरियड के अंदर सबसे छोटा है. तो हैलोजन्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू सबसे ज्यादा है पीरियोडिक टेबल में.
अब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्यों लिया और इतनी जबरदस्त अट्रैक्शन के साथ क्यों लिया? क्योंकि उसको एक ही चाहिए था नोबल गैस बनने के लिए। अब अगर आपके पास पहले से ही नोबल गैस है, मान लो नियोन है 1s2 2s2 2p6, इसको आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ये तो नहीं लेगा। There is no need of extra electron to neon because it's already stable configuration. But अब जबरदस्ती उसको दे रहे हो तो we have to increase a shell. Electron extra जाएगा कहाँ? It must be added in 3s. So for adding the new shell, electron in the new shell, energy is required. अब release नहीं होगी, energy is required. That's why there is plus 110. Plus means energy required. So from the values of electron gain enthalpy, we can compare the electron affinity. More negative the value of electron gain enthalpy, we can sum up it. More negative the value of electron gain enthalpy, more is the electron affinity. Simple. जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतनी ही, दिस इज मोर मोर नेगेटिव मीन जितनी, जैसे -700 उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज्यादा होगी। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू 0 आ जाती है, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, क्योंकि उनको हम इलेक्ट्रॉन अगर देना चाहें तो we must add a new shell and for that energy is required. Okay? हैलोजन के केस में मोस्ट नेगेटिव होगी। मोस्ट नेगेटिव का मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। उन्होंने बता दिया, दो रीजन है। फर्स्ट इज हैलोजन का साइज स्मॉल है, सेकंड इज इनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए टू गेट द स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। So this is all about the electron gain enthalpy and electron affinity. How the electron affinity is determined from the electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy is energy जिसकी वैल्यू को हम कंपेयर करके देख के उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कंपेयर करते हैं रिलेटिवली किसकी ज्यादा है। ओके, सो यू कैन से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज अ स्केल टू measure which atom has a more tendency to take up an additional electron. Next is a successive electron gain enthalpies. Just like ionization energy, if we have a atom say X, not it is X, it will take electron, it changes to X negative. So this is EA1, first electron gain enthalpy, or you can say it's electron affinity 1 is when one electron is added, okay, and one more electron is added to it. It's very difficult rather. EA2, okay. Second process is very difficult because negatively charged ion cannot easily accept one more electron. तो पहले नेगेटिव है। तो ऐसे ही जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन इन गैसियस स्टेट टेक वन इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू फ्लोरीन नेगेटिव, और इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो है -328 किलो जूल पर मोल। जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ओके, ऑक्सीजन इज इन गैसियस स्टेट, टेक वन इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू O नेगेटिव, सो इट्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज -141 kilojoule per mole. But when one more electron is added to it, it changes to O2 negative. That's a difficult process. Now energy will not release, energy will absorb. 702 kilojoule energy is required. But what does it mean? It means O negative cannot accept electron. When we add one extra electron to O negative ion, energy is required because this O negative ion has no tendency to take one more electron. It's already negative charge. So question is formed from here that when this F changes to F negative,
it is exothermic process, while when O changes to O2 negative, it is endothermic. Explain. So answer is there. When you are changing F to F negative, its value is minus 328. It's endothermic because F is a halogen. Its configuration is 1s2, 2s2, 2p5. It take one electron, change into 1s2, 2s2, 2p6. So this is noble gas configuration. It attains noble gas configuration. That's why it is a high tendency to take up extra electron. So it's an exothermic process. What you see here is that when you change O to O2 negative, it is overall endothermic process. You can see from here that when O changes into O negative, it is minus. When O negative change into positive, it is plus. So overall, we can say is minus 141, 165. So this much energy is required to change O to O2 negative. So overall, it is endothermic process. So this is about the successor electron gain enthalpy and one very important problem of NCERT. Next is variation along the group, along the period. Variation of electron gain enthalpy in periodic table. First is long group, top to bottom. Generally, when we move in a group, atomic size increase and therefore effective nuclear attraction decrease and thus electron affinity decrease. On moving down the group, what happened? Atomic size that increase. Effective nuclear charge. Effective nuclear charge decrease. So electron affinity decrease. Simple. When you move down the group, size बढ़ रहा है. साइज बढ़ने से क्या होगा? जो आउटर मोस्ट शेल है वो दूर जा रही है न्यूक्लियस से, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो है वो कम हो रही है. ओके. फॉर एग्जांपल, व्हेन यू कंपेयर दीज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, this is group number 17, halogens. So I'm writing the value of their electron gain enthalpy. This fluorine has minus 328 kilojoule per mole में है ये, and chlorine has minus 349, bromine minus 325 or minus 295. See, generally we can see that when we move down the group, the value decreases. But here is a problem. What about fluorine and chlorine? So from here you can say that chlorine has more electron affinity than fluorine. This is another question. Why?
साइज बड़ा है क्लोरीन का, फिर भी उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम है। एंड एक चीज और, दैट क्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्लोरीन की है, फ्लोरीन की नहीं है। इसका रीजन क्या है? What is the reason? That is due to very small size of fluorine. There is interelectronic repulsions. इंटरइलेक्ट्रॉनिक मीन्स साइज बहुत ही छोटा है, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है, और इसके अंदर जो है 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। These 9 electrons they repel each other. रश है ज्यादा, so these 9 electrons they accommodate in a very small space, so they repel each other. अगर एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आसानी से नहीं आएगा। Clear? So that's known as an interelectronic repulsion. You have to use this word, or you can say it's electron-electron repulsion. Due to which an extra electron will not feel attraction. That's why it's not easily added. In case of chlorine, the size is sufficiently large. Chlorine में size इतना ज़्यादा है that interelectronic repulsions are not there. So that's why chlorine can easily accept one extra electron. So that's why its electron gain enthalpy is more negative than fluorine. This is very important question. You can say among the periodic table, halogens have the most negative electron gain enthalpy. मेटल की भी नेगेटिव होती है, जैसे आप लिथियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करो, लिथियम की भी -60 के आसपास वैल्यू है, लेकिन वो बहुत ही कम है। ठीक है, लिथियम मेटल्स की जो वो भी नेगेटिव होती है, वो दे कैन आल्सो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन बट वेरी लेस टेंडेंसी। यू कैन जस्ट a 60 kilojoule energy is released. It means it shows that it's very less tendency to accept extra electron. Now fluorine has about 328. You can say about 5 times more tendency to attract the electrons. So among the product in the product table, halogen have the maximum, or you can say most negative electron gain enthalpy. You can say the electron affinity of halogen is maximum in the product table. And among the halogen, chlorine has the maximum tendency to accept the electron. Okay. तो यही चीज जो है ऑक्सीजन और सल्फर में भी होगी। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने थोड़े से डिफिकल्ट हैं सल्फर के कंपैरेटिवली, क्योंकि ऑक्सीजन इज आल्सो स्मॉल, ग्रुप नंबर 16, उसमें भी इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होती है। ओके, नेक्स्ट इज, ये था ग्रुप में, अब आ जाएगा नंबर 2, लॉन्ग पीरियड। From left to right. On moving across the period, atomic size decrease. जैसे हम पीरियड में मूव करेंगे, atomic size जो हमारा वो क्या कर रहा है, decrease. Then force of attraction exerted by the nucleus on the electron increase. है ना, force of attraction exerted by nucleus or electrons that increase. Clear? Thus, atom has a greater tendency. Atom has greater tendency
to take additional electron, or you can say electron affinity increase. सिंपल, क्लियर। पीरियड में अगर हम देखेंगे तो हैलोजन जो एंड पे आता है उनका साइज स्मॉल है और उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो ज्यादा होगी। ओके, नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर मेटल इज वेरी लो एज कंपेयर टू नॉन मेटल्स। Noble gases have zero tendency to separate electron. So you can say they have a positive value for electron gain enthalpy. So this is all about the electron gain enthalpy and electron affinity variation in the periodic table, and some important points are there like fluorine and chlorine comparison, F negative, F2, F negative, O2, O2 negative. These are the questions in the NCERT.